ओके, प्रैक्टिस करते हैं। इस टाइम पे देखिए यहाँ पे इसका टॉप व्यू यहाँ पे गिवन है, देन ये साइड व्यू और ये फ्रंट व्यू यहाँ से, अगर आप साइड व्यू यहाँ से देखेंगे तो ये व्यू यहाँ पे गिवन है। ओके, ठीक है, इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बेस से यहाँ पे देखिए 17/60 मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और सॉलिड वर्क स्क्रीन पे आएंगे एंड देन मैं कॉर्नर रेक्टेंगल लेता हूँ इसमें, देन इसको ड्रॉ करेंगे। राइट क्लिक एंड टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड 60/17। ओके, 60/17। नाउ देन अगेन ये बेस ड्रॉ हो गया एंड पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका 40 डायमीटर एंड देन 50 डायमीटर सर्कल इसको ड्रॉ करेंगे। एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ इसके मिड पॉइंट से एंड देन फ्रॉम हियर राइट क्लिक टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड 50 डायमीटर एंड 40 डायमीटर। ओके, देन अगेन यहाँ पे देखिए इसमें जो 15 डायमीटर एंड देन 20 डायमीटर इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एंड राइट क्लिक एंड फ्रॉम मिड पॉइंट। ओके, राइट क्लिक टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड 50, सॉरी यहाँ पे देखिए 20 एंड देन 15 डायमीटर, 20 डायमीटर एंड देन 15 diameter. Okay, next specify the distance from 40 and this is 30. Okay, okay. Now यहाँ पे देखिए इसमें जो 20 and then 15 यहाँ भी है, इसको ड्रॉ करेंगे सेम एंड ओके, नेक्स्ट टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड or you can also add the relation. Select the circle and hold the control key and make equal. Now select the circle and hold the control key and select the circle, make the relation equal. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और सर्कल है, हमें जो लेना है 10 डायमीटर। ओके, इसका डायमीटर यहाँ पे देखिए जो किया गया है 10 डायमीटर। यहाँ से लेता हूँ सर्कल एंड देन टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड स्पेसिफाई द डायमीटर 10. ओके, नाउ then again, okay, take trim and trim the entities. Okay, and trim it. Now trim. Okay, trim it and trim it. Okay, now right click extruded boss base. Five and specify the dimension 5. Take circle and draw the circle. Okay, यहाँ भी ड्रॉ कीजिए इधर पे, यहाँ पे ड्रॉ, take smart dimension and specify the diameter 12 and then 8. Okay, 12 and 8. Now
select the circle and the circle, hold the control key and make relation equal. Now select the circle and the circle, hold the control key and make relation equal. Okay. Select the center point and the center and hold the control key or make horizontal. Okay. Now select the circle and the circle, specify the center distance, which is 46. Okay. Now select the circle and the line and specify the distance 7. Okay. Now select this circle and the line or specify the distance 8. Okay. Now sketch is fully defined. एंड यहाँ पे देखिए हमें इस पोर्शन को जब यहाँ ड्रॉ करना है तो हमें इसमें क्या करना होगा, कन्वर्ट द एंटिटीज. ओके. नाउ सेलेक्ट इट एंड कन्वर्ट द एंटिटीज. एंटिटीज को हमें कन्वर्ट करना होगा यहाँ एंड सेलेक्ट द चेन. ओके. तो यहाँ हमें कन्वर्ट करना होगा इसको एंटिटीज में. नेक्स्ट. ओके. एंड देन ड्रॉ द लाइन. Here take a smart dimensions and specify the distance is 2. Okay. Okay. Then again देखिए यहाँ पे एक और, ये जो आउटर सर्कल है यहाँ पे ये 20 and then 15 diameter एक और सर्कल हमें ड्रॉ करना है. then select circle and draw it. Okay. and take a smart dimension, specify the dimension 15. now okay, and take power trim and trim it. Take then right click and extrude it boss face. and boss face हमें करना है यहाँ पे clear the section and then select the portion and portion and the portion, और यहाँ पे दीजिए 5 extrude boss face distance. and now okay. so here it is, model is ready. now file and then save the model and file, make drawing from part, browse, select your standard sheet. okay. drawing model, तो लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रीव्यू ऑन कीजिए, इसको यहाँ शो कीजिए. एंड इस व्यू को ओके, ड्राइंग प्रोजेक्शन व्यू एंड इसके व्यू को आप यहाँ शो कीजिए, साइड व्यू को. एंड यहाँ पे लीजिए आप शेडेड विथ एज आइसोमेट्रिक व्यू. ओके. राइट क्लिक एंड इसको यहाँ रख लीजिए, साइड पे डायमेंशंस लगाएंगे. अब इसको देखिए नीचे करेंगे एंड इस पे जो है डायमेंशंस लगाएंगे आप. ठीक है. डायमेंशंस यहाँ पे एनोटेशन मॉडल और यहाँ सेलेक्ट कीजिए एंटायर मॉडल. एंड अगर आपको एनोटेशन चाहिए तो यहाँ से ऑन कीजिए, टिक कीजिए इसको एंड देन सेलेक्ट इट. ओके. तो जो जो आपने डायमेंशंस दिए हैं वो यहाँ पे सभी डायमेंशंस होंगी. जो नहीं होती यहाँ पे द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशंस आपने लगा लीजिए. देखिए यहाँ पे 46 एंड 60. ठीक है. 7, 12 एंड 17. ओके. नेक्स्ट एंड देन 12 then 5 and 5. ठीक. so I hope कि क्लियर हुआ होगी. नेक्स्ट फाइल एंड देन सेव एज, और सेव एज टाइप में आप यहाँ पे लीजिए सेव एज टाइप Adobe Portable Document Format PDF एंड देन सेव इट. PDF जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट. इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.